कि कैनेडियन जिहड़े नागरिकां वास्ते वीज़े है वो बंद कर दिते गए है फिलहाल। हाँ, OCI कार्ड जिन्हां कोल है वो इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन जिन्हां नूं टूरिस्ट वीज़ा चाहिए है, विजिटर वीज़ा चाहिए है, कैनेडियंस नूं वो हुण उपलब्ध फिलहाल नहीं होएगा। BLS तो भी तुहानूं सर्विस नहीं मिलेगी। तो ये बयान जो है भारत सरकार का वो तुहाडे नाल असीं साझा करन लगे हाँ। भारत सरकार दे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दे जिहड़े प्रवक्ता ने मिस्टर बागची अरिंदम बागची इन्हां दा नाम है जी। आओ उन्हां दी सुनदे हां गलबात की कह रहे ने वो इस वीज़ा सस्पेंशन नूं लैके, ताकि तुहानूं सीधी डायरैक्ट जानकारी इहदी मिल सके। There is a degree of prejudice here, of prejudice. They have made the allegations, they have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. Manish, your query was on briefing our partners, etc. Look, on this one, as I said, we have been, of course, engaged with our partners on various issues, particularly including this one. We have been discussing with them. We have conveyed our position, how we see these developments. And I think those are part of ongoing conversations, but I'm happy to share a little more if you wish to talk about it. I'll come back to that. I just thought I'll mention, Manish, I'll come back to Manish because let me just make a couple of other points. I think, Sudhi, you had a query about Canada sharing any information. No, let me clarify. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think it's been made very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. So that is answer to both sides of it, I think you asked. There was a query on, I'll come back. There was a query regarding from, I think, मनीष झा, आपका प्रश्न था सिक्योरिटी पे। देखिए, सिक्योरिटी के मामले पे आपने पूछा था हमारे, हाँ, देखिए, हमने इसलिए एडवाइजरी इशू की है और डिटेल एडवाइजरी है उनको क्या करना चाहिए। एक प्रश्न और था कि कुछ ग्रुप्स या हिंदूज अलग से नहीं, एडवाइजरी सारे इंडियन नेशनल्स के लिए, हम इस तरह से नहीं देखते। इंडियन नेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनके सबके लिए एडवाइजरी है। एंड हम चाहेंगे कि वो उस एडवाइजरी को देखें और पालन करें उसका। Sahil, your query was on whether we are sending security. No, look, we have always believed that it is the host government's responsibility to provide security. If there is some places we have our own security posture also, but look, I don't want to discuss security measures in public. That's not an appropriate situation. If I could come back to what Manish, you asked about, as I said, we have ongoing conversations with friends and partners. We have made our position quite clear to them on the lines that I've outlined just now. That's why I thought I'll outline our position first, that there has been no specific information, and we're willing to look at that if provided. On the issue of a threat, Vinita, you mentioned for various things. Look, I don't know how to react to this. We obviously condemn any threat. But look, the overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism. And not just, terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time, from our western neighbor, Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. And that, we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? So I think that's what we would like to say. Yeah, no, as I said, one question at a time. On the issue of measures for our security, as I think the same question was asked, I don't want to discuss publicly, but of course we take
It is under the Vienna Convention. We expect host governments to provide security and for our premises, for our diplomatic personnel. What exact specific measures, I don't want to discuss publicly. प्रणय, आपका प्रश्न था वीज़ा पे. मैं जैसे भी बताया कि हमने वीज़ा इश्यूज़ पे, लेट मी एक्चुअली नहीं बताया था मैंने, आई थॉट हमने डिस्कस किया था. आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमीशनर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं. इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है. इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं. हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी. पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो ਮਿਸਟਰ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟਸ ਬੀਇੰਗ ਫੇਸਡ ਬਾਈ ਆਵਰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ this has disrupted their normal functioning, or accordingly our high commissions and consulates are temporarily unable to process visa applications. तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਂਪਰਰਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ, ਰਾਤ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ. ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ. BLS ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਟੂ ਸਸਪੈਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟਿਲ ਫਰਦਰ ਨੋਟਿਸ. ਤਾਂ BLS ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ OCI ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ. ਤਾਂ OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਅਟੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ. ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਾਤ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਰਪਟ ਹੋਈਆਂ.